Hello. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसका टाइटल है टू डिटरमिन द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ डिस्क रोलिंग ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। इससे रिलेटेड जितनी पिक्चर्स हैं अवेलेबल वो मैंने अपलोड की हैं, आप लोग उन्हें डाउनलोड करो। वंस यू डाउनलोड देम देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। एक टिटू अपना माइक ऑफ कर लो। टिटू अपना माइक ऑफ कर ले।
हाँ जी, हो गया डाउनलोड? सही। ये है अब इफ इट्स विजिबल टू ऑल, तो ये ऑपरेटर्स है बेसिकली। दिस वन इज द इंक्लाइंड प्लेन। पहले तो मैं बताऊं कि ये है क्या। द टाइटल ऑफ द experiment is to determine the radius gyration of a disk rolling over an inclined plane. अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका एक एंड जो है वो एक्सट्रीम लोअर लेवल पे सेट है, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. दीज आर टू स्क्रूज, टू डिफरेंट स्क्रूज टू एडजस्ट द level of this side, and the other one is here. We have another screw to adjust the level of the other side. To change the angle every time, we're gonna rotate the screw to raise or reduce the height of the other end of this inclined plane. Right. So in this inclined plane, we have this disc. This disc is gonna we're gonna put the disc on the highest level of the plane, right? And then we're gonna let the disc rolling down the inclined plane. So it's gonna roll down the inclined plane to the lowest end, right? So it's going to take some time for that, and that time we're gonna measure using a stopwatch, right? And it should not hit the sides of this inclined plane, right? So it should be the movement without any obstruction. There should not be any other friction uh, than the friction we have in the axle of this disc and the surface of the inclined plane. So that's the only friction. There should not be any other friction. So we have to make sure that there is no other friction or there is any other loss in the velocity of the disc, right? सर जी जो एयर की फ्रिक्शन होगी उसको इग्नोर कर देंगे. What? तो एयर फ्रिक्शन. Air friction तो इतनी ज़्यादा नहीं है ना. That is, air friction is not significant, so we're not going to consider that, right? Because the weight of this disc is almost 3 to 5 kg. I'm going to see that what is the exact value of the weight, right? That is written over these pages. So this is how we're going to perform the experiment, right? We're going to measure the time, and then there are a few calculations that you're going to make to find out the radius of gyration, right? So ये तो पहले, this one is the apparatus, right? The picture of the apparatus. Now let's move to the other pictures. For example, this is a set of observation that you're gonna have, right? The H1 is the height of one side, and another side is H2. H2 is fixed all the time, and H1 is changing for every observation. And we're going to take 3 reading of the time, and we're going to find out the average value of the time taken by the disk to get to the lowest point, right? So these are the set of observation, and this gives us the angular velocity, and we're going to find out the radius of gyration. That formula is there. I'm going to give you that as well. You see that the small r is the radius of the axle, right? The axle is the rod which is touching the inclined plane, right? And the capital radius is 7.6 centimeter, right? That is also given on the other page that you can see. So these are a set of observations we're gonna have, and that basically are taken from already performed experiment. तो ये भी आपके पास available है. उसके बाद this is another picture. This is coming from one of the lab report. तो ये भी एक setup है. We don't need this one, right? Because we don't have anything like this. The one you see here, this is a kind of spring balance or weight system that is there is an auxiliary attachment with the apparatus. We don't need this one, right? We only need this inclined plane and then this running over the inclined plane, right? And this is the
calculations you're gonna do. This is experimental value of the radius of gyration, and this one is the theoretical value of the radius of gyration. Again, you're gonna find out both of them, and once you find them out, you're gonna find out the percentage error. This G is the gravitational acceleration, omega is the angular velocity, h1 is the height of the highest point, and h2 is the height of the lowest point. And this whole thing is going to give us the experimental value of the radius of gyration. This is experimental, and this one is theoretical, right? And you're going to find out these two values, and you're going to compare them at the end. I think let me check that इसमें जो theoretical value है, I think that is not okay. I'm going to see that, and then I'm going to let you know. Anyway, you try to find out the experimental and theoretical value using this formula for any set of observation of your own choice. So that's what the experiment is all about. And if you have any questions, you can ask. See the radius of gyration, ये disk का है या फिर ये disk का radius of gyration है. ठीक है? और कोई? Anybody else? Sir, how can we find the radiation? What? फिर बताओ. Or wait a second, I'm gonna. सर ये बता दीजिए ग्रेशन क्या चीज है और हमें इसका रेडियस क्यों चाहिए? All right, first of all, make a correction.
कि ये जो थियोरेटिकल वैल्यू है दिस इज r डिवाइडेड बाय √2 है फॉर अ डिस्क. ये करेक्शन कर लो. भैया दो आ गई हैं 15 माह से 28 माह तक दो हफ्ते Tengo dinero. सर ये गैरेशन बता दें क्या चीज है. हाँ जी, किसी किसी ने कोई सवाल पूछा है. somebody asked about what about the gyration. यस सर. Radius of gyration that basically gives us an idea about the shape of any member. ठीक है, shape of any member जो that we can देखो जनरली होता ये है कि जब आप किसी चीज को स्पिन करेंगे या you are gonna spin it in the form of a wheel, then the radius about which that thing is gonna rotate, that is called the radius of gyration. और ये एक imaginary radius होता है. It's not always lying on the object. ये ज़रूरी नहीं होता. एक random axis हम लेते हैं और उससे जो distance of the center of gravity of the object होता है, that is taken as the radius of gyration. और ये लेते हम इसलिए हैं क्योंकि जब हम एक assembly बना रहे होते हैं तो the set of forces acting on that particular assembly, उसमें हर चीज़ का behavior different होता है. उस behavior को predict करने के लिए we need radius of gyration. ठीक है, ये radius of gyration is not lying on the object all the time. In some cases it lies on the object, but in most of the cases it's away from the object at some distance from the surface of the object. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब डिस्क के केस में, अब ये डिस्क है तो डिस्क के केस में जो उसका रेडियस है डिवाइडेड बाय द √2 इज गोना गिव अस द रेडियस gyration theoretical value, right? So you get it? सर Mm-hmm. ये एक बार स्मॉल आर और लार्ज आर के बारे में बताएं किस किस का रेडियस है. स्मॉल आर जो है वो है इस एक्सेल का रेडियस. ठीक है, और जो कैपिटल आर है वो इस डिस्क का रेडियस है. ओके सर. ठीक है, ये यहाँ पे कुछ आपको नजर आ जाएगा. दिस वन इज एक्सेल एंड दिस वन इज दिस. स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दोनों ऑब्जर्वेशन में मौजूद हैं. दिस इज 7.6 सेंटीमीटर एंड
small r is 0.625 centimeter. Okay? So these are two values. Okay, sir. Thank you. So anybody who've done it yet for any sort of reading, have you found out the value of theoretical and experimental radius of gyration? And then at the end, the percentage error.
और किसी ने अभी तक? सर अगर इसमें वही पीछे वाला फार्मूला लगाएं परसेंटेज एरर का तो इसमें तो एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। कौन सा वाला फार्मूला लगाएं? थ्योरेटिकल माइनस प्रैक्टिकल ओवर थ्योरेटिकल। वो आप कोई भी लगाओगे तो वो एक जैसी रहेगी। कितनी आ रही है एरर? सर 89% एरर आ रही। नहीं, ये तो गलत है। उसमें मैंने कहा था कि जो आपका थियोरेटिकल फार्मूला पेज पे डिस्प्ले हुआ है वो आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू है। वो गलती से लिखा मल्टीप्लाई है, लेकिन वो आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू है। सर वही किया डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 किया। तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रही है? सर एक्सपेरिमेंटल आ रही है 0.5452। और थियोरेटिकल? सर 5.37। 5.37 आ रही है। जी, और वहाँ पे 0.52 और 0.5452। यूनिट्स चेक करो। आई थिंक यूनिट्स का गड़बड़ है। ओके सर। सर जी ठीक की है, वैल्यू यूनिट्स को सभी को 9.88 मीटर में कन्वर्ट करो। सब यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करके देन फाइंड इट आउट। इतनी ज़्यादा एरर तो नहीं ना आएगी, कोई 10% 15% मैक्सिमम, वो तो समझ आता है, लेकिन 98% तो नहीं समझ आता।
हाँ जी, आपने कन्वर्ट किए हैं इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करके किसी ने किया है? जी सर -1.47% एरर आ रहा है। चलो ठीक है, 1 भी ठीक है। मेरे पास आया है 4%। जो लोग करते जा रहे हैं वो अपलोड करते जाएं। The students who are done with the calculations, they upload it.
All right. Anybody, if you have any question related to this, anything that you don't understand? सर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्यों ज्यादा है उससे थ्योरेटिकल से? पहले थ्योरेटिकल ज्यादा होती। फिर बताओ एक्सपेरिमेंटल क्यों ज्यादा है? यस सर। फॉर एग्जांपल किस केस में? सर ये जो जो सा रेडियस निकाला है हमने। नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस तो थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल इसमें भी ज़्यादा है, और इसमें खैर ये पहली रीडिंग तो ठीक ही नहीं है जिसने की हुई है, और इसमें भी एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है, इसमें भी एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है। अच्छा देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब ये फॉर श्योर तो नहीं है, लेकिन जो ये सेट ऑफ रीडिंग्स लिए गए हैं इसमें टाइम की ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी ना हो, क्योंकि बड़ा माइनर सा फ़र्क है ना, 1 पॉइंट समथिंग में ज़्यादातर लोगों का फ़र्क है। तो इतना सा फ़र्क जो है वो उस केस में भी आ सकता है, यानी जो टाइम एक्चुअली लगेगा उससे कम टाइम नोट कर लिया गया है। ठीक है, तो इस वजह से शायद वो फ़र्क आ रहा है। और दूसरा, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो आई थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल में होगा भी नहीं। ठीक है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस है ना, इसमें हमारी जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो बहुत कम है। इसमें एक चीज़ है, वो रोल कर रही है एंड दैट्स इट। रोल कर रही है तो उसकी फ्रिक्शन होगी सिर्फ एक्सल के एंड पे, और वो भी कांटेक्ट का जो स्पैन है वो बहुत छोटा है, फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। एयर वाला तो केस ही नहीं बनता ना यहाँ पे, क्योंकि एयर तो जब हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो वहाँ पे इतनी वो तेज़ हवा तो चल नहीं रही होती कि उसकी वजह से इस साइज़ के आइटम की कोई रेजिस्टेंस हो। तो ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि उसमें टाइम की जो रीडिंग्स ली गई हैं ना, वो शायद उसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। दैट्स व्हाई वी हैव दिस मच। सर जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी? नहीं, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कांटेक्ट का स्पैन बहुत छोटा सा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आप लोगों ने करना वही सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करना है कॉपी के लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ये करनी है कि एप्लीकेशंस मुझे हर केस में चाहिए। आपने एप्लीकेशंस पे रिसर्च करनी है। You have to find out something from the internet about the applications of these type of experiment. And what you're gonna do, you're gonna find out an application and find out the significance of radius of gyration in that particular application for the particular member. Right? That's what you're gonna do. This is what that we call the research, and that's at your end. You're gonna do it thoroughly. You're gonna find out the significance of radius of gyration in that particular application for that particular object. ठीक है? I'm gonna take attendance from the teams. All right, if you don't have any question, then that's it for today.
Excuse me, sir. Without? Do we have to search for application for this experiment? Yeah, you have to find out the application of this experiment, right? And you have to find out the significance of radius to gyration for that particular object you are looking for the application for, right? Okay. All right, somebody earlier asked about the difference in the experimental and theoretical value. But you see, if on the basis of your observation, because you haven't performed the experiment yet, but you can idealize that you have almost a meter or a meter and a half long inclined plane over which the disk is rolling. You know, when you're gonna leave the disk, it's not gonna take the maximum velocity right at that moment. It's gonna take some time. So, but if the length of that inclined plane is longer, then the effect of that minimum velocity is going to be reduced. So in that case, you're going to see that the difference in theoretical and experimental values is going to be very least, right? So, and probably your higher value of the experimental experiment is going to be reduced. That probably is going to be less than the theoretical values you were getting. So this could be one possibility. But this is what you're going to talk about when you're going to conclude the experiment. Excuse me, sir. Yes? Sir, how can to submit the experiment by Word or notes? Or I couldn't get you, but I think your question is about submission, right? Yes, yes, by Word or notes, right? You're going to submit it in the soft form, right? But probably at the end of the lab, I'm going to ask for the hard ones, right? Okay, all right. Thank you, sir. Okay. Any other question? All right, that's it for today. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir ji.